वेलकम टू बी लर्न में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, टॉपिक जनरल इंट्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, सेशन नंबर 6। टॉपिक कवर्ड इन दिस सेशन: पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, provision affecting partnership accounts, and now partnership. Partnership consists of more than one owner. पार्टनरशिप का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है वो एक से ज़्यादा हो. इट इज़ फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स हु कंट्रीब्यूट कैपिटल, स्किल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी and agree to share profits and losses of the business. According to Section 4 of Partnership Act 1932, partnership means the relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. That means पार्टनरशिप क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह होता है, एक एसोसिएशन होता है जो किसी भी बिजनेस को करने के लिए तैयार होते हैं और उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, तथा बिजनेस जो है वो सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा सबके लिए चलाया जाना चाहिए. इस तरह का कोई भी बिजनेस आइडेंटिटी पार्टनरशिप कहलाती है. द पर्सन हु कम टुगेदर टू फॉर्म पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर. जो सारे लोग इकट्ठे होकर के पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं और एवरी पर्सन पार्टनर कहलाता है. एंड कलेक्टिवली आ फर्म, और इकट्ठे अगर हो जाते हैं तो फर्म कहलाती है. नाउ फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं? नंबर 1, agreement. Partnership is created by an agreement and not by operation of law, as in case of Hindu undivided family. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेंबर जो है जन्म से ही उस फैमिली का मेंबर बन जाता है, जबकि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट का परिणाम होता है पार्टनर का बनना. द एग्रीमेंट फॉर्म द बेसिस ऑफ देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, और आपसी रिलेशनशिप जो है एग्रीमेंट से ही बनता है. नंबर ऑफ पर्सन्स. देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म ए पार्टनरशिप. पार्टनरशिप को बनाने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है. द मिनिमम नंबर ऑफ अ पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग ए पार्टनरशिप must not exceed 10 in the case of banking business and 20 in any other business. Number 3, business. The agreement should be to carry on some business so as to make profit. A joint ownership of some property does not constitute partnership. Number next, sharing profits and losses. The agreement must be to share the profits and losses of the business. An agreement entered into by individuals for a charitable purpose will not treated as a partnership. That means पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट होना भी मस्ट होता है.
या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप के लिए प्रॉफिट और लॉस होना आवश्यक होता है। किसी भी चैरिटेबल पर्पज का कोई भी कार्य पार्टनरशिप नहीं कहलाता। And now mutual agency, the business may be carried on by all the partners or any of them acting for all. Thus each partners act in two capacities, one as an agent and other as a principal. He can bind the firm and its other partners by his acts, and he is also bound by the act of other partners with regard to the business of the firm. पार्टनरशिप डीड, एक्चुअली पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड लाइक एज ए चार्टर्ड ऑफ द कंपनी, जैसे कंपनी का चार्टर्ड होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसी तरह से पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनरशिप डीड फर्म की चार्टर्ड का काम करती है। अ पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। दिस एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल or in writing. The law does not stipulate the partners to have a written agreement, but in order to avoid the disputes that are likely to arise in the conduct of business, a written agreement is preferred. A written documents containing the terms and conditions of the conduct of partnership business is called पार्टनरशिप डीड। तो रिटन डॉक्यूमेंट्स जो होता है कि किस तरह से हमें बिजनेस करना है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चार्ज किया जाएगा, सैलरी ऑफ द पार्टनर्स क्या होगा, ये सब चीज़ें पार्टनरशिप डीड के अंदर इंक्लूड होती हैं। द पार्टनर्स आर फ्री टू इनकॉर्पोरेशन प्रोविजंस इन द डीड सब्जेक्ट टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. A partnership deed generally consists of particulars relating to the following: Number 1, name of the firm, firm का नाम, and place of the business where the firm is conducted. Number 2, names and address of all the partners. They are agree to share profit among them. Nature of business and its duration, किस तरह का बिजनेस होगा और कितने कार्यकाल तक होगा. The amount of capital to be contributed by each partner, सभी पार्टनर्स ने कितना पैसा लगाया है एज ए फॉर्म ऑफ कैपिटल, that is also mentioned in partnership deed. The accounting period of the firm, फर्म का अकाउंटिंग पीरियड कौन सा होगा, either calendar year or financial year. The bank where the money is to be deposited and the authority of the partners to sign the checks or documents. Profit and loss sharing ratio, rate of interest both on capitals and drawings, the maximum amount and period of drawing, loan from partners and the rate of interest on such loan, conditions regarding the payments of salary and commission to the partners, rights of partners, duties of each and every partners and their liabilities also, methods of maintaining accounts, their audit and revaluation of assets and liabilities at the time of admission of new partners or retirement of any partner or restructuring of the firm.
valuation and treatment of goodwill in the case of admission of a new partner or retirement or death of an existing partner. Number 15, treatment of loss arising out of insolvency of one or more partner. Number 16, methods of setting the dues of deceased partner to his legal representatives. Next number, methods of setting disputes among the partners. Next point, procedures for the dissolution and settlement of accounts after the dissolution. Number next, any other matter relating to the conduct of पार्टनरशिप बिजनेस. तो इतनी सारी पॉइंट्स जो हैं आपके पार्टनरशिप डीड में होते हैं. देन प्रोविजन इफेक्टिंग पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप अकाउंट्स. In the absence of any written or oral agreement among the partners, the following points are to be considered or the following provisions of the Partnership Act shall be applied. Profit sharing ratio. Partners share the profits and losses of the firm equally irrespective of their capital contribution if the partnership deed is silent regarding the profit sharing ratio. Interest on capital. No partner is entitled to claim any interest on the amount of capital contributed, where, however, the agreement provides for interest on capital, it is payable only out of profits of the business. In other words, if there are losses, interest on capital will not be allowed even if the agreement so provided. Interest on loan. If any partner, apart from his share of capital, advances loan to the firm, he is entitled to receive interest at the rate of 6% per annum. Interest on drawing. No interest will be charged on drawing made by the partners in the absence of partnership deed, or partnership deed is silent about the interest on drawing. Then remuneration to the partner. No salary or commission will be paid to any of the partner for participating in the business of the firm if it is not mentioned in partnership deed. And now, calculation of interest on drawing. Interest on drawing can also be charged provided the partnership agreement makes a special provision in this regard. This may be justified on the grounds of discouraging over withdrawal by the partners. Interest on drawings is also charged with reference to time period. When the dates of drawing are not specified, the interest on drawing is calculated on the total amount of drawing for a period of 6 months, on the assumption that the amount are drawn throughout the year. But the date of drawing are clearly given, the interest to be calculated separately for each based on the period involved. And now, do it yourself. What is meaning of partnership? What are its features? Question number 2, what is partnership deed? And that's it from session number 6. Thank you.